Hello everyone. Once again, welcome to my channel. My name is Shiva Krishnan, and I upload videos related to data analytics and its tools such as Excel, Power BI, and I also upload videos related to AI. So, in case you are new to my channel, I would like to extend a warm welcome. Okay. So, I'm back to the mock interview with AI series. All right, and this in this interview we'll be doing the mock interview for this role. Okay, act as a recruiter interviewing me for a fragrance consultant role. Okay, and the rest of the things that is only for making sure that this is as per YouTube community guidelines. Okay, so I will not read more on that. All right. So आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दे पढ़ना चाहता हूँ राइट that this is for educational purposes only. ठीक है, this AI generated mock interview content is designed solely for demonstration practice and personal skill development. ठीक है, participation in or completion of this mock interview does not, okay, it does not guarantee, promise or represent an offer of employment, job interview or hiring outcome. एग्जैक्टली exactly. कोई आपको जॉब की गारंटी दे नहीं सकता दुनिया में. ठीक है, अगर कोई करता है तो कुछ गिने चुने लोगों के लिए होगा. राइट, और वहाँ पर भी कनेक्शन होता है, सब कुछ होता है, जो मेजोरिटी केसेस में तो होता नहीं है. राइट, इन मोस्ट मेजोरिटी केसेस पीपल हु डू नॉट हैव कनेक्शंस, पीपल हु डू नॉट हैव any contacts or anything, they are not going to be guaranteed that they are going to get a job. Okay, nobody can guarantee. All right, and in reference to this, there is also additional thing that this is independent. There is an independent assessment, meaning that the real world interview process involves human judgment. Okay, and it all depends on the market conditions. It all depends on the recruiter's um, state of mind at that time. Um, your body language, your facial expression, your understanding of that particular job role, your understanding of the market conditions. Um, I mean, not the market conditions, your understanding of the job role and whether how confident you are, ठीक है, what is your skill set, and etc. and what stage is that company in, ठीक है, ये सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, and so I thought that I just wanted to make this very clear. All right. So कल आपने वीडियो में देखा होगा कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या है. मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर लिया है मैंने इसको. ठीक है, यू कैन चेक दिस आउट इन दैट प्लेलिस्ट. Mock interview with AI, उसके benefits क्या क्या है, that why you have to watch this video, what's in it for you. ठीक है, so let's get started with today's video. All right, and I will be honest with you that I am not going to use any other AI model, and I will pretend that as if this is a real interview. ठीक है, all right. So here's the first prompt. ठीक है, so thank you for joining us today. My name is XYZ this Priya, and I'll be conducting an interview for a fragrance consultant role. I'm looking forward to learning more about your background and how you approach customer service in the world of fine fragrances. Let's begin with the first question. Can you walk me through how you would greet a customer entering the fragrance section, and how you start guiding them towards discovering a scent that suits their personality or occasion? Wow. Okay. I'll drop the microphone while I answer this question. All right.
Okay, so here's what I wrote, right? Thank you for interviewing me today, and it's a pleasure to be here. So to answer your question, I'll greet the customer with a smile and ask them whatever fragrance that they love the most and most what occasion are they searching for. ठीक है कि इसके अकॉर्डिंग मैं फ्रेग्रेंस सजेस्ट करूँगा, right? So starting with warm greeting and tailoring a suggestion based on customer's preference and occasion shows attentiveness and professionalism, right? Let's move to the next question. Imagine a customer tells you that they enjoy fresh, uplifting scents but are unsure how to distinguish between citrus and aquatic notes. How do you explain the difference in simple, engaging terms and then guide them towards testing options that fits their taste? Wow. Okay. Hmm. Now I'm going to talk the microphone down once again so that I can write this. Okay. Okay. So um, here's what the answer is, right? That if the customer is undecided, ठीक है, अगर customer decided नहीं है, तो आप कैसे explain करोगे simple words में? तो मैं बोलूँगा citrus has to do with orange related है, ठीक है, and aquatic जो है water based and काफ़ी soothing and calming है, ठीक है, and then फिर आप दोनों option test कराओगे, ठीक है. So this is I made little bit of guesswork here, ठीक है, because I have never worked as a fragrance consultant. Um, so this is all guesswork, right? So this is a clear and approachable way. So there's a feedback here that this is a clear and approachable way. Okay. Picture a scenario. Next question. Picture a scenario where customers hesitant to try fragrances directly in the skin because they are worried about committing too quickly. Uh, how would you guide them to through the testing process using blotter strips, and what steps would you take to help them narrow down their choices without overwhelming them? Wow, exactly. तो क्या होता है ना, देखो कुछ लोग they are very allergic, right? um, ठीक है, so some people have allergy and all that, so how would you guide them, right, through the testing process using blotter strips? um,
Wow, okay. And what steps would you take to help them narrow down their choices without overwhelming them? So I'm going to drop the microphone down again while I write the answer. Okay. Okay. So the scenario is कि अगर कस्टमर को लगता है कि ठीक है कि डायरेक्टली अपने स्किन पे मुझे ट्राई नहीं करना क्योंकि काफ़ी मैं एलर्जिक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो हाउ वुड यू गाइड? ठीक है, तो क्या स्टेप्स लोगे आप? तो इसमें आई गो बाय, मेरा आंसर इसमें ये है कि आई गो बाय सजेस्टिंग दैट ब्लॉटर स्ट्रिप आप ट्राई कर सकते हो। ठीक, मैं इसमें कि स्किन पे इफेक्ट नहीं करेगा, दैट देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द स्किन। एंड मैं दूसरा ऑप्शन सजेस्ट करूंगा सच एज इतर, विच इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल एंड इज फ्री फ्रॉम केमिकल्स एंड इज नेचर बेस्ड। ठीक है, right? So here, I got the feedback that acknowledging customers' hesitation and offering blotter strips as safe, non-intrusive way is exactly kind of reinsurance. ठीक है, that builds trust. कि इससे कि trust होगा, right? Introducing natural options like traditional thoughts can also enrich the consultation experience. Alright, so दूसरा question है कि suppose a customer is browsing alone and seems undecided between warm, spicy fragrances and soft floral blends. How would you create an engaging consultation that helps them compare these two families, and what techniques would you use to ensure that they feel confident making a choice between before leaving the store? वाओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट? कि समझो कि ये कस्टमर है जिसको जो अनडिसाइडेड है, ठीक है, जो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये तीन फ्रेग्रेंस के बीच में कौन सा होगा, वार्म, स्पाइसी एंड सॉफ्ट फ्लोरल ब्रांड्स. How do you create an engaging consultation that helps them compare these two families? And what techniques would you use? Uh, you have to ask the question, right question, so that they could customer can decide, right?
ओके सो इमेजिन द क्वेश्चन ये था कि कस्टमर ब्राउज कर रहा है, ठीक है, एंड सीम्स अनडिसाइडेड बिटवीन वार्म स्पाइसी एंड सॉफ्ट फ्लोरल ब्लेंड्स, ठीक है, ये तीनों चीज़ के बीच में कंफ्यूज है। तो आप ये कंसल्टेशन को कैसे क्रिएट करोगे, क्या टेक्निक से होगा? तो सबसे पहली बात तो मैं पूछूंगा कि ठीक है कि आपको इन तीनों फ्लेवर में से कौन सा टॉप फेवरेट आपका, उसके अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड अगर कस्टमर ट्राई करता है तो ऑन दैट बेसिस पे he or she will be eligible for other promotional offers which he or she will not get elsewhere. एंड इससे क्या होगा कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन भी मेट रहेगा एंड दैट वी गेट टू ड्राइव मोर सेल्स, ठीक है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट, फोमो, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग सेल्स ओरिएंटेड आंसर, right? That's the feedback that you're balancing customer preference with promotional incentives, which is how consultants can drive both satisfaction and revenue, ठीक है। Next, imagine you're working during a busy weekend and multiple customers are exploring fragrances at the same time. How would you manage each person attention, ensuring no one feels ignored while still maintaining a professional and welcoming atmosphere? Uh, ठीक है, ये क्वेश्चन में आंसर, मतलब ये क्वेश्चन ये है कि मानो कि बिजी वीकेंड है जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर लोग हैं एंड सबको एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, राइट। एंड आपके पास समय भी बहुत कम है, राइट, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो पर्सनलाइज्ड अटेंशन आप कैसे दोगे? इंश्योर नो वन फील्स इग्नोर्ड, आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि कोई इग्नोर्ड फील नहीं कर रहा एंड सबको टेंशन भी मिल रहा है इन दैट परफ्यूम शॉप, सो वाइल स्टिल मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल एंड वेलकमिंग एटमॉस्फियर? So I'll drop this microphone down again. Okay. Uh,
Okay, so that I just now had answered this question. ठीक है कि मल्टीपल कस्टमर्स को आपने एक साथ एक्नॉलेज कर दिया एंड बाकी अदर एम्प्लॉयज़ को भी आपने कहा कि इन सारे लोगों को एंगेज करना ताकि कोई फील ना करे कि मुझे इग्नोर किया गया है. ओके, राइट. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's say a customer is purchasing a fragrance as a gift but doesn't know the recipient's preferences. How would you guide them through choosing a safe, thoughtful option, and what kind of questions would you ask them? Um, okay, राइट. तो ये क्वेश्चन ये है कि मान लो कि आप किसी के लिए मतलब कस्टमर किसी के लिए गिफ्ट कर रहा है लेकिन कस्टमर को नहीं पता कि रेसिपिएंट का प्रेफरेंस क्या क्या है. तो हाउ वुड यू गाइड देम थ्रू चूजिंग अ सेफ येट थॉटफुल ऑप्शन एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड यू आस्क टू हेल्प देम नैरो डाउन द सिलेक्शन. वाओ. तो आई एम गोइंग टू ड्रॉप द माइक्रोफोन व्हाइल आई टाइप द आंसर. मैं माइक्रोफोन ड्रॉप करूँगा जब मुझे आंसर टाइप करना पड़े. Okay, so I'll suggest to go for a fragrance that most people are comfortable with. ठीक है. जैसे इन केस कस्टमर्स का फ्रेंड जो अगर
सेटिस्फाइड नहीं है तो वी कैन ऑफर समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री, लो सेलिंग स्टॉक बट विथ हायर इम्पैक्ट, ताकि हमें ज़्यादा नुकसान भी ना हो, एंड ऑल्सो एम एट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है। स्लो मूविंग आइटम, नॉट लो सेलिंग स्टॉक, स्लो मूविंग आइटम। ठीक है। So I'm going to almost, end the interview as well because I have some other things to do. ठीक है। तो आंसर लिखने के बाद मैं ये भी बोल दूंगा को पायलट को कि वे गोइंग एंडिंग द मॉक इंटरव्यू एंड देन यू कैन गिव मी फीडबैक। ठीक है। So the next question is, imagine a customer is browsing and mentions that they have recently purchased several fragrances from other stores. They seem hesitant to buy again because they already have a collection. How would you engage them in a way that highlights the unique qualities of your store's offering and encourages them to see value in adding more fragrance to their wardrobe? Uh, Customers browsing and mention that they have recently purchased several fragrances from other stores. They seem hesitant to buy again because they already have a collection. How do you engage them in a way that highlights the unique qualities of a store's offering and encourages them to see value in adding one more fragrance to their wardrobe? Wow. I'm going to drop the microphone again while I type this answer. Okay? Okay. Um, so यहाँ पे मेरा आंसर है कि विदाउट बीइंग पुशी मैं कस्टमर को इन्फॉर्म करूँगा कि ये कुछ बेस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंसेस है।
ठीक है, कि कस्टमर को बताऊंगा कि जो बेस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंस है हमारा, एंड सबसे लोवेस्ट प्राइस में हम लोग सेल कर रहे हैं ओनली ड्यू टू प्रमोशनल ऑफर, एंड बहुत जल्द इसका प्राइस बढ़ने वाला है। एंड जब उनके पास परफ्यूम्स का कलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तब इनके पास हमारा आइटम को रेफ़र कर सकता है, एंड हमारा प्रोडक्ट काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, एंड विल मेक इट मोर मेमोरेबल। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे इसने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी फीडबैक दिया होगा, राइट? राइट, तो इसमें आंसर ये था कि यस, बेस्ड ऑन दिस आई एम सेलेक्टेड, राइट? देखो, स्ट्रेंथ क्या है कि कस्टमर एंगेजमेंट, यू कंसिस्टेंटली emphasize greeting customers warmly and making them feel acknowledged, that's a strong retail skill. Consultative approach, you ask questions about preferences, occasional occasions, favorite fragrance families, ठीक है? Sales awareness, highlighted promotions, upselling opportunity, inventory management, slow moving item, team collaboration, you mentioned involving colleagues during busy times. और इसमें क्या है कि areas to improve, fragrance note explanation, ठीक है, कि इसमें कौन सा और डिटेल में बताना पड़ेगा। कस्टमर लॉयल्टी बिल्डिंग, ऑफरिंग कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स इज क्रिएटिव, बट इन प्रैक्टिस लॉयल्टी प्रोग्राम्स और एक्सक्लूसिव कंसल्टेशन में बी मोर सस्टेनेबल स्ट्रेटजी। ठीक है, क्लोजिंग टेक्निक्स, यू लीन हेवीली इन प्रमोशन, बैलेंसिंग दिस विद इमोशनल स्टोरी टेलिंग, बैलेंसिंग दिस विद इमोशनल स्टोरी टेलिंग, दिस सेंड क्रिएट्स लास्टिंग मेमोरीज, कुड स्ट्रेंथन कस्टमर्स कनेक्शन। ठीक है, आउटकम ये था कि मैंने अच्छा पोटेंशियल दिखाया फ्रेग्रेंस कंसल्टेंट में, आई शोड एम्पथी, सेल्स एक्यूमेन एंड अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो यस, आई एम ऑलमोस्ट सेलेक्टेड, आई एम सेलेक्टेड हियर। ठीक है, that's it for this interview, and I'll meet you in the next video. All right, I'll continue with this mock interview with AI series. So thank you so much for watching the video, and I'll meet you in the next video. Okay, thank you so much. Do subscribe to this channel. I'm telling you that this type of content will be not available elsewhere, YouTube पे. ठीक है, and you have nothing to lose. All right, thank you. Take care and have a great day. Bye bye.